all of the country's top stories this Thursday evening. We're going to start with the story we've been tracking through the entire day today. The Prime Minister arriving in Jammu and Kashmir. This is his first visit since the abrogation of 370 in the entire region. Now, the visit was closely watched, especially because it comes at a time when a number of local party leaders from, for example, the National Conference, the PDP, the People's Democratic Party, these parties in the region continue to demand that elections take place because the people in this region have not had an elected representative government since 2018. Now, the Prime Minister's speech, and we're going to walk you through it in just a second, but the Prime Minister's speech in the region was largely directed towards the development that his government says that it has brought over the last few years. This development, according to him, has largely been aimed towards boosting the infrastructure in the entire region and also focusing on tourism. We're going to walk you through the key messages. First, we'll just play out what the Prime Minister had to say today at the rally. This was done in a stadium that reporters said had almost 2 lakh people. We'll talk about that in a second. First, though, take a look at excerpts from the speech. मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया, जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। सर, आज पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है कश्मीर घाटी में और ये कहा है कि पिछले 10 सालों में जो इसकी पिक्चर है, नए कश्मीर की जो हमने एक नींव रखी थी, आज देखने में आया है कि बदलाव देखने को मिले हैं। आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं कौन हूं उनका उसके बारे में कहने के लिए। उन्हें देखा है, अफसोस है वो मर नहीं आए हैं। मर की हालत भी देख लेते, पता लगता हम कहाँ हैं। ये सड़क देखिए जो बानीहाल से रामबन तक है, उसकी हालत देखिए। हम तो देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 370 की आड़ में कुछ फैमिलीज ने इसका फायदा उठाया। 370 इनको याद रखना चाहिए। महाराजा हरि सिंह साहब को ये भूल गए। उन्होंने 1927 में कानून बनाया था। किस लिए बनाया था?
कि डोगरा कल्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। यहाँ गरीब लोग थे, उनकी ज़मीनें पंजाबी खरीद लेते। उस वक्त पंजाब था, उस वक्त हरियाणा पंजाब या पाकिस्तान नहीं था। बचाने के लिए कि नौकरियाँ यहाँ हों, यहाँ के बच्चों के लिए हों। आज हाल क्या है? Okay, let's go over to our colleague Ishan Vani to understand more about not just the rally today but also its reception. My colleague Ishan was actually on the ground within the stadium when it took place. Ishan, just tell our audiences about some of the messaging. We've just played out for our audiences excerpts from the Prime Minister's speech, clearly highlighting the broad theme of development. Just tell our audiences about the broad themes and also tell us how first it was received on the ground by the thousands that had gathered there. Well, Prime Minister's message was clearly for the youth because he talked about corruption and its implications on the job culture in Jammu and Kashmir. Prime Minister said that because of the corruption, there were only few families who would generally employ, in particularly the Jammu and Kashmir Bank, their family members or their relatives and give them jobs in Jammu and Kashmir Bank. Although there's already a case that is going on, investigation is going on into the backdoor appointment, in particular to Jammu and Kashmir Bank, which was also highlighted by Prime Minister today. So when it comes to the job, because that has been one of the key and major issues for the BJP, to creating job culture in Jammu and Kashmir, to help boost the job society and to create certain hubs through which the jobs could be created. Although the Prime Minister directly did not name the National Conference of the PDP, but he said that there are families who got benefited out of 370, and you heard Farooq Abdullah responding to that, saying that 370 was historically done because the Maharaja Hari Singh wanted to ensure that there's a protection of land and jobs given to the people of Jammu and Kashmir, and particularly the Dogras living in Jammu. So yes, on one side you have the PM speech, which resonates towards because the Lok Sabha elections are also around the corner. The BJP would want that PM speech about development, tourism and the job sector, and also the mega infrastructure push that the government has been trying to do in Jammu and Kashmir, that helps them get votes on the ground, because BJP hasn't been able to create any inroads in Kashmir. All the three MPs that currently represent Kashmir's three Lok Sabha seats are from the National Conference, and because of the delimitation, now you have the Poonch Rajouri, which is in Jammu, also falling into South Kashmir parliamentary constituency. So it'll be interesting to see whether Rajouri Poonch seats and the speech that he has made today will be able to get more attention from those particular pockets where the BJP wants the BJP finally the lotus to bloom. On the other hand, you also have the mega infrastructure push like the smart city and the creation of jobs, and at the same time the Prime Minister's push to ensure that the people realize that there has been corruption which has taken place, and that seems to be the major agenda that we heard from the Prime Minister today, apart from highlighting the main projects that the government has been able to undertake, including the Zadmo tunnel, which is also highlighted by the Lieutenant Governor Manoj Sena, which is an important connectivity and strategic tunnel between Ladakh and Kashmir. Ishan, if we just take a look at what the former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Farooq Abdullah, had to say in the bite we just played out before we came to you, he is, however, questioning the state of some of the development that the centre says it's brought. He's questioning, for example, the quality of the roads. The opposition has also been critical of the crowds that gathered at the rally today. They've argued that the crowds were forced to come, that most of them were government employees that were not given a choice. Can you tell us, though, you're on the ground, what are the reactions you've gotten from locals, particularly when it comes to the development pitch that the BJP is pushing? Well, there's no doubt, at least in the Srinagar city, roads have been, made and Srinagar city has been developed under smart city projects. Though there are grievances that we even heard from the BJP workers that have gathered. People have their own issues like getting loans for artisans, giving certain subsidies and schemes to people. So every person who had gathered here had a different take on it. Some people wanted electricity to be better because Kashmir has witnessed prolonged delays and cuts in the electricity this winter. So that's where certain people want electricity to get better. While if you talk about the urban beautification, the government has been really trying to beautify the Srinagar city, be it the Polo View Market, Jhelum Riverfront and other locations as well. But the opposition has been critical, saying that it is not happening for the first time. They have also been trying to give infrastructural boost, and who gave Kashmir hospitals, universities and other institutes, because this is for the first time the centre is directly ruling Kashmir in the last 10 decades.
But before that, it was the other governments which claim that they have been trying to do a betterment for the people of Jammu and Kashmir. And when you talk about, Farooq Abdullah, he is talking about those areas and pockets which are rural. And whether there has been any development or not, that is interesting to see from the Farooq Abdullah's point of view. This all will reflect once the assembly elections are announced, because everybody has been talking about their part of the story. But how does it resonate with the people on the ground? That will be interesting to see when the election commission announces assembly polls. Will they happen simultaneously with the Lok Sabha polls? That's interesting to see. But an election commission team is due to visit Kashmir Valley to take stock of the situation and see that how security situation is. What are the inputs they're able to get from the top officials on the ground? But it has been very long since a popular government hasn't been there, and that is why you have seen criticism happening from both the sides. But yes, this is the first mega rally after the abrogation of Article 370, which took place, where such number of people were brought in. Though there were allegations leveled by Umar Abdullah and Mahbub Mufti that the government employees were brought in buses, and they were told that you have to compulsorily be here at morning at 5 and then participate in this function. While the BJP, on the other hand, has responded back saying that it is the people who want to come and see the Prime Minister, and because he's one of the popular Prime Minister that the country has, and that's why they're coming here to witness for themselves what the Prime Minister says, and how the vikas that the government is trying to push, see it themselves, and see that how the grounds are changing. Ishan, we'll come back to you in a few moments. Ishan has been bringing us live updates from the rally grounds through the morning today. We'll walk you first, though, through some reactions to this story. Take a look. During his crucial Kashmir visit, what was on display for the Prime Minister was also the art and craft of Kashmir. These are the handmade items that the Prime Minister saw today, and something which Kashmir has been proud of for several years. You can see this is a traditional hand making of items that is done, and the government wanted to showcase to the Prime Minister that how does this entire Pashmina weaving take place. We have been told that Prime Minister also made some purchases here. So this will go a long way in conveying a message about Kashmir's art and craft. Some of them who were on display was Mr. Padma Shri, who has recently received Padma Shri award. We also spoke कुछ दिन पहले हमने बात की, तो कैसा लगा आज आपने पद्म श्री भी लिया और उसके बाद आप आज यहाँ पे अपना गुलाम नबी साहब अपना आर्ट भी डिस्प्ले कर रहे हैं? बढ़िया लगा, सारा कुछ अच्छा है, जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो क्या बात हुई, क्या यहाँ पे कैसा लगा उनको, क्या पूछा? हाँ, मोदी साहब से बात हुई है, उन्होंने पूछा कि कैसे काम कर रही हो, ये कितना आदमी काम कर रही हो। मैंने खुदा अपना बेटा है, अपने भाई है और भी 2-3 आदमी मेरे साथ काम करते हैं। Kashmir's art and craft has been vibrant across the globe, and today Prime Minister coming here, he made some purchases, and you also showing him the sort of art and craft we have. How big is it for us? Well, it's very big for us, but Prime Minister through his attire has been consistently promoting the Kashmir handicrafts, but today he purchased Pashmina hand-spun, hand-woven stool directly from the artisan. That is what we want. We want the buyers to get connected with the artisans directly, so that the artisans are empowered. And only the genuine stuff is promoted by purchasing a GI certified stool, which is hand spun, hand woven. Indicates the fact that the quality needs to be ensured through certification, which we are doing as far as these GI tags and QR codes are concerned. And it's really big, and we feel happy that this purchase was made by Honorable Prime Minister. आपका नाम बताइए, कहाँ से आई हैं और क्यों आई आज यहाँ? जी, मेरा नाम आमीना के नाम से मुझे जानते हैं। मैं बारामूला से आई हूँ और मैं मोदी जी को देखने आई हूँ। हमेशा टीवी पे देखते थे, लाइव देखते थे, मोबाइल में, तो अभी फेस टू फेस देख रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? क्या हालात बदले हैं, आप उस वजह से आई हैं? आप देख लीजिए, अगर हम कहें जैसे यहाँ सियासी पार्टी के लोग हैं, सियासी पार्टी के इतने लोग नहीं हैं जितने आवाम है यहाँ पे। किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आवाम यहाँ है और बहुत ज्यादा आवाम आई है। खुशी है तभी तो आए हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। औरतें, मर्द, आप देख लीजिए चारों तरफ, मुझे लग रहा है 2 लाख के करीब लोग होंगे। तो आपको लगता है कुछ बदला है, सही समय यहाँ पे बदला है कुछ? जी, मुझे लग रहा है बदला है। अब आप पूछेंगे क्या चीज़ बदली है। बदली जैसे मैं आपको बताऊं
अगले 5 वर्षों में यहाँ पे कोई किसी को ना 50 रुपए 50 पैसे नहीं देते हैं ना, फ्री इलाज होता है लोगों का, है ना, फ्री 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को आप देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए, अभी एक लड़का बोल रहा था हनी के बारे में, उसे कितना बेनिफिट, कितना लाभ उसने उठाया है। अब एक लड़की ने कहा बेकरी के बारे में, महीने के वो 2 लाख कमाती हैं। तो आप देख लीजिए, यही चीजें पहले क्यों नहीं थी? लोग क्यों खुश है, लोग क्यों खुशी से आ रहे हैं? हम सुबह भाई को रुखसत करते थे काम के लिए, शाम को 2 दिन के बाद वो मरा हुआ हमें मिलता था। हमें ऐसे ही कितनी औरतें विधवा हो गई है, किसी का एक बेटा और बिना बेटे की रही है वो। किस चीज ने आपको कायल किया कि आपने मोदी जी को ये गाना डेडिकेट किया? मुझे काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए सॉन्ग तैयार करूँगा, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके कामों से बहुत मुतासिर हूँ मैं। तो फाइनली कल मेरा सॉन्ग हो गया, तो मैंने फिर गा दिया वो। तो किस चीज़ ने आपको कायल किया, जिस तरह से मोदी जी का यहाँ आना और आपका वो गाना कंपोज करना? देखिए, वो हिंदुस्तान के लीडर नहीं, पूरी दुनिया के लीडर हैं, और उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से सब उनके फ़ैन बन गए हैं। चाहे कश्मीर हो, चाहे पूरी दुनिया हो, पूरा हिंदुस्तान हो, उनका फ़ैन है आज। तो क्या उम्मीदें हैं जिन्होंने इस आज दौरा किया यहाँ कश्मीर में, और काफ़ी लोग जो है वहाँ पर रैली में भी जमा थे, तो क्या उम्मीद है आपको? काफ़ी सारी उम्मीदें हैं हमें। यहाँ पे बेरोज़गारी काफ़ी है, हमारे साउथ कश्मीर में हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है। यहाँ पे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। तो बहुत सारी आशाएं रखते हैं मोदी जी से कि वो ये बिजली की प्रॉब्लम है, वो सब हमें सब कुछ देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है मोदी जी से बहुत। A man who has made a tricolor and Indian map on a carpet. ये कालीन है, आपने इस पे बनाया है, क्या आइडिया था इसके पीछे? इसके पीछे ये आइडिया कि सर, मैं नरेंद्र मोदी से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें लोन्स की ज़रूरत है, हमें लोन्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। वो डिपार्टमेंट लिख के देते हैं, फिर हमें घर घर के ठोकरे खा रहे हैं। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, हमें भी लोन्स प्रोवाइड किया जाए। और एक और बात है कि हमें नया स्कीम जो मोदी साहब ने अभी लॉन्च किया है, भारत विकसित विश्वकर्म स्कीम, हमारा ट्रेड इसमें शामिल नहीं है, ये ट्रेड भी इसमें शामिल होना चाहिए। जी, ये बताइए कितना टाइम लगा आपको उसको बनाने में, कितना मुश्किल था ये बनाना? कालीन पे ये बनाना आसान नहीं होता। जी, बहुत मुश्किल है, कम से कम हमें 2.5 महीने लगते हैं इसमें इस कारपेट को बनाने में। ये वॉल हैंगिंग कारपेट है। तो क्या ये पीएम को देना चाहते हैं आप आज? जी 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 जी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। Thank you. Thank you. So as you heard from them, that these two have made this small little carpet of ये silk का है, of silk, and one of the silk on silk is expensive, but they want to give it to the Prime Minister, waving it right now to the Prime Minister in a hope that he'll see it and then take it with himself while they have appealing for schemes for them as well. Okay, we're taking you right now to breaking news coming in, playing out in Maharashtra. That big question, Shiv, Sena, Uddhav Thackeray versus Eknath Shinde-led faction. That question very much continuing, it seems. The Supreme Court right now expressing reservations about how the Speaker used the test of the legislative majority to ascertain which faction was the real party. These are within comments where the Supreme Court was hearing what the Uddhav Sena had to say. The Uddhav Sena has challenged the Maharashtra Assembly Speaker's refusal to disqualify members belonging to the Eknath Shinde-led Shiv Sena. Remember, this is a split that happened all the way back in 2022 within the Shiv Sena. Some leaders siding with Eknath Shinde, who is now the Chief Minister. Some leaders siding with Balasaheb Thackeray's son, Uddhav Thackeray, the former Chief Minister of Maharashtra. Now, we're going to go over to our colleague Ananya to understand more. He is our legal correspondent. Ananya, this is obviously a very complicated story. So this latest development, if I could ask you to break it down for our audiences in layman's terms. Effectively, what is the Supreme Court saying about Rahul Narvekar, the Speaker's decision? Because this is a decision the Speaker made back in on Jan 10th, if I'm not wrong. Just tell us what this may effectively mean. Well, this was an oral observation made while the court was hearing the submissions of both the sides of, in fact, both the factions of the Shiv Sena. While on the one hand there was Mr. Mukul Rohatgi and Mr. Kapil Sibal, who were actually
appearing for, in fact, the Uddhav Thackeray camp, very clearly saying that, the decision of, in fact, the Maharashtra speaker is not right and is contrary to the judgment. And that's the reason why, in fact, the Chief Justice of India also questioned as to whether this approach of using the legislative party method, the majority in the legislative party method, was the correct one, whether it was contrary to the judgment. We'll have to wait and watch for the rebuttals that come in from the Eknath Shinde faction. When it comes to this particular observation, the matter will now be listed after the holy break. And very, very clearly and categorically, there was an urgency shown by Mr. Kapil Sibal since elections are approaching, and that's the reason why they want this matter to be heard expeditiously. So we'll have to wait and watch as to how things pan out, whether or not the whole orders of, in fact, the Maharashtra Speaker and also the Election Commission of India stand, and whether the Shiv Sena stays, in fact, with Eknath Shinde or not. Okay, Ananya, thank you for bringing us that context. Let me just tell our audiences, it's not just national elections that Ananya is referring to. The state of Maharashtra will also be seeing elections in a few months. So two crucial contests for which this question is very important, which is the real Shiv Sena. We're going to head into a quick break. On the other side, more of the country's top stories. This is The Nation at 5. कर सकूं। चलिए, मैं कोशिश करता हूं। मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे। जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए, मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया पीएमईजीपी का। पीएमईजीपी के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर एफपीओ मिला। और एफपीओ के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में, जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया?
सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए, मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए, मैं कोशिश करता हूं। मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए, मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए
Welcome back. You're watching The Nation at 5 right here on CNN News 18. We're now taking you to a story that took place last week and the updates on it. Last Friday in the afternoon, you might remember Rameshwaram Cafe, a famed cafe in Bengaluru, saw an IED blast take place. 10 people were left injured after the incident took place, and the search for the prime suspect very much remains on. You might remember a few days ago, the National Investigative Agency took over the entire investigation. Just yesterday, it was announced that 10 lakh rupees would be awarded to anyone who had any leads. And the most recent development we have for you is that just of a few hours ago, fresh CCTV visuals being found, fresh footage being found of the prime suspect. Now we're going to go over to our colleague Arunima, who's with us. Arunima tracks the NIA. We'll go to her first to understand more about the entire story. Arunima, could we come to you to understand what the most recent developments in the NIA's search have been, where they are, and can you also just tell us, Arunima, as you tell us about the timeline that they're reconstructing, where each of those locations stand for any audiences that are watching from outside Bengaluru too? First thing first, it's going to be a week now since this blast happened at the Rameshwaram Cafe. And even though the suspect was captured on CCTV multiple times, and it was initially believed that he'll be caught in no time, that's what Siddaramaiah, G. Parmeshwara, D.K. Shiv Kumar, they all said. Even after a week, the NIA is still hunting for the person. A picture of his grabbed from CCTV captured visuals was released to the public. 10 lakh rupee reward is what NIA has announced. And post that, it looks like some information is trickling in. The first set of information suggested that the suspect perhaps could have visited a place of worship after he placed the bomb at the Rameshwaram Cafe. And from there is some CCTV footage which shows him moving towards Tumkuru. And that has led NIA teams to visit the area. A team was at Bellary also. We are told some people are being questioned at that place of worship to find out if any of them spotted this suspect. His face is now clearly visible after multiple CCTV grabs inside a bus. Him walking out of the cafe, the footage that we are just showing you shows him on a Bangalore Transport Corporation bus. There was CCTV which captured him there without the mask. So that was a shot in the arm for the NIA. As far as the timeline goes, at about 11:34, he's seen getting out of a bus, route number 500D, and at the bus stop he's captured. Then he's captured again inside the Rameshwaram Cafe, where he stays on for about 9 minutes, and just an hour before the blast, he's seen talking on the phone for some time. So that immediately led NIA to take the tower dump of the nearby mobile towers to see who he was talking to. But nothing concrete came out of that, leading investigators to now wonder if this was a deliberate ploy to throw the investigators off track. If that is so, if this person has done such recce, if he's trying to cover his tracks by wearing a mask, a baseball cap, if he knows exactly where the CCTV cameras are, looks like a very, very radicalized module is behind this. But till the time the suspect is arrested, nothing can be said with certainty. At this point, the Shimoga module is top on the suspect list of NIA. Arunima, thank you for bringing us those details. Let me just take our audiences to some breaking news we've got coming in this story. Then we'll go over to our reporters for more context. We're learning that the blast suspect reportedly visited a place of worship shortly after this incident. We'll go over to our reporters to get you more details. But the NIA, as we speak, is now questioning one more person. They're probing if the prime suspect met anyone or received any logistical support before he left Bengaluru. Okay, let's go over to our colleague Harish Upadhyay to get more context on this. Harish, obviously, take us through what the NIA is investigating right now in terms of this place of worship and specifically the person that they are questioning. But also, Harish, if you could tell our audiences, just in terms of kilometers, the kind of distance travelled by the prime suspect from the Rameshwaram Cafe into the bus, into this place of worship, perhaps outside the city. Just convey that to us in distances too, please, so we can understand. Well, Rameshwaram Cafe is in Kundalalli. This place of worship is roughly around 4 or 5 kilometers from there. He's taken multiple buses is what we understand. He's seen near this place of worship. This is where he's changed his attire is what the NIA believes. And from the same exact location is where his cap has been recovered, as Arunima earlier put out in the day, that his cap was recovered by the NIA. Now the NIA is questioning one person, and it is believed that the NIA wants to probe if he met anyone at this place of worship or if anyone came there
provided him any sort of a logistical support. That's the area of interest for the NIA right now to probe that aspect. But he was seen in that location, and what we also know is that from there he's gone out of Bengaluru. He's ended up in Bellary. That takes a good 8 hours or so if you go via a car, but if he's taken public transport, if he's often changed, he's actually gone fast. He's reached there late night, he's reached Bellary, which means he exactly knew where he would go after placing this bomb at the Rameshwaram cafe. And in the meanwhile, as we pointed out earlier, whether it's in Tumkuru or Bellary, both places, there are clear-cut leads for the police to believe that he had reached those places. Bellary is where we've got last information of him being there. But more worryingly is the fact that this information is of 29, the day the blast happened. Beg your pardon, the last Friday when the blast happened. And we've had a time lapse, a lot of time since then that he might have travelled. Has he travelled in the neighbouring state? Has he gone to some other state, or has he gone to a different district in Karnataka? That's a worry for the police, because there has been a lot of collapse in terms of time, and he could have travelled quite a bit in this entire last 5 or 6 days or so. Okay, right, Harish, that 24 to 48 hour period that Arunma has been pointing out is the golden hour. That has passed. It's going to be a week tomorrow since the incident took place. Let's go back to our colleague Arunma to understand more now. Arunma, in the initial few days when the investigation was taking place, comparisons were made to a 2022 Mangalore incident in which a cooker bomb was used. Can you just tell our audiences about the different angles that the NIA, since they've taken over the investigation, is looking at? See, when a blast happens, how does the probe team begin? They first look at the forensic report. That forensic report is still awaited, but there are preliminary findings which suggest that this was a nitrate-based explosive that was used, where nuts and bolts were packed in a very tight container. It was wrapped around with enough adhesive device and then put inside with the relay timer. It is like a bulb-like structure that was used, wire was used, and a 9-volt transistor battery. All of this is like a signature, it's like a technical signature which helps the probe team understand that where was this kind of an IED previously used, and that is why they started probing the Shimoga module and the Bengaluru blast, because the signature on both the IEDs seemed similar kind of transistor battery, similar kind of packaging, similar kind of timer device, digital timer device, and that led them to the Shimoga module, which was allegedly behind the Bengaluru blast. 2 engineering graduates, 1 BCom graduate, all youngsters in the age group of 23 to 25, they were arrested. The handler, though, is still missing. 2 foreign nationals, 1 foreign-based handler who reportedly goes by the name of Colonel. They're all still missing, and the NIA says that there is a possibility that they could have activated sleeper cells. Members who were part of their module who were equally radicalized, have they been activated now? Are those people responsible for the blast? That's the line of probe that the National Investigation Agency is taking at the moment. But till the time the suspect is arrested, it's all a shot in the dark. Arunma, stay with us, please. I just want to take our audiences to some more breaking news we've got. Let's take a look. Okay, the Rameshwaram Cafe, which is where this incident took place, it's in Brookfields, and the breaking news we're sharing with you right now, it's set to reopen tomorrow. The owner had actually posted a message implying exactly this on social media. I believe the Chief Minister will be present at the reopening. My colleague Harish Upadhyay with us to bring us more details on the entire reopening. Harish, tell us please, do you see the Congress government as having been very careful about its messaging in the hours succeeding the blast and the days succeeding the blast, in terms of making sure that all messaging is very careful, very secular in terms of each step the leadership takes? Well, absolutely. Remember, 2 things are at stake here. One, how the government responds to it. Whether quick enough or not, that's a question, because the BJP in the initial couple of days was asking why the NIA hasn't started probing this. And the other is, it is also attached to the image of Bengaluru, the brand of Bengaluru as an investment destination. And that is one of the main reasons why the government was constantly saying that there was nothing to worry. This was just one case, and they are very confident that they would crack this case very soon. And that's why tomorrow you are seeing, when Rameshwaram Cafe is reopening in the evening, you have the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Home Minister, all of them confirming their presence over there for this particular event. It is also, remember, the owners of Rameshwaram Cafe have got just only around
2 days or so to renovate the whole place, fix the damages that the structure might have suffered or the interiors might have suffered, and reopen the whole cafe. And they've done that, and tomorrow is also auspicious day, and that's one of the main reason why the owners seem to have decided to reopen the whole cafe tomorrow, exactly a week after this blast. Two things to mention here. In terms of the NIA probe, now the state government believes that while the NIA will be the lead agency, the CCB is not completely off the investigation. They too are continuing the investigation, and the state government here not willing to get dragged into any argument on why the MHA decided to probe this case without really seeking an explicit concern from the state government. The Home Minister maintaining that there is no issue with two agencies going ahead and probing the same case. Officers on the ground saying that there is a lot of coordination, so there's nothing to worry. Harish, thank you. We'll of course have you bringing us all of the updates when the cafe is reopened tomorrow afternoon. Let's take our audiences right now to a short break. This is The Nation at 5. That was a story from Karnataka. When you return in a few minutes, we'll continue to bring you stories from across the country. मैंने अपना ये कारोबार बढ़ाया और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली, और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया, और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5000 केजी शहद बिके हैं, और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए, और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा, और 2023 में मुझे सर FPO मिला, और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया, और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है, तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना, और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया, और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है, और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के
आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौतियों को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं। Welcome back. You're watching The Nation at 5 right here on CNN News 18 and we're now taking you to a defense-related story. On Tuesday, China and the Maldives signed a defense deal that meant that China was offering free military assistance to the Maldives. Now, India, in a move that is being seen as a counterbalance to that move, has commissioned a new base for itself. This base will be on the Lakshadweep Islands. We're going to take you now to a ground report. This is my colleague, Akash. Take a look. With rising concerns over maritime security amidst expanding Chinese presence in the Indian Ocean region, India has inaugurated INS Jatayu, a new naval base located at the southernmost tip of the Lakshadweep Islands in the western Indian Ocean region. Jatayu in Ramayana was the first responder and gave significant situational awareness to Lord Ram. In the same way, INS Jatayu here on Minicoy Island will play the role, and in fact an important role for Indian Navy in the western Indian Ocean region. The southernmost tip of Lakshadweep Islands, and in fact the base has been commissioned and will now be developed in terms of advancements and capabilities.
The Indian Navy had a detachment in Minicoy, but now a fully fledged base will enhance the Navy's operational capabilities in the area. I'm present at INS Jatayu here on Lakshadweep Islands, and behind me is the commissioning ceremony of INS Jatayu that is happening as of now. You are seeing all these Navy personnel and also the new naval ensign of INS Jatayu. INS Jatayu marks the start of a phased expansion plan to bolster India's surveillance and security posture near the 9-degree channel. The facility currently has ship docking and other platforms with plans to include deployment of airstrips, advanced sensors, radars and BrahMos missiles on the island. This is the southernmost part of the Lakshadweep Island, and as far as this base is concerned, so this base will work as eyes and ears for Indian Navy. When we talk about maritime domain, so we know that how crucial Lakshadweep Islands are at a point when China is constantly expanding its reach in the Indian Ocean region. This base is giving a larger message. Lakshadweep and Minicoy Islands are strategically located in the Arabian Sea. Several shipping lanes pass from near these islands. It was in 2012 that the naval detachment at Kavaratti was commissioned as a naval establishment, INS Dweep Rakshak. With the commissioning of a second base in Lakshadweep, India's maritime force will have an edge. I am on board INS Vikrant, and joining me now is the Indian Navy Chief Admiral R. Hari Kumar. Sir, first of all, today Indian Navy has got a new base, INS Jatayu. If you can talk to us on the importance and the significance of this base. It is the southernmost island in the Laccadive chain. It is the southernmost island on the western seaboard, and it is about 200 miles from the mainland. So therefore, if you are able to have a base with the capability to improve surveillance as well as respond when there is required, so that actually adds to the capability of Bharatiya Naval Sena to have better maritime domain awareness and better ability to respond. So we are looking at, once you commission it, we should be able to develop more operational infrastructure, more administrative facilities and so on. At a time when the Indian Navy has been carrying out operations in the Gulf of Aden and in the Arabian Sea, this new base will act as a vital hub for counter-piracy and anti-narcotics operations in the region. The commissioning of INS Jatayu is a major step forward in India's maritime security strategy. It further strengthens India's position in the Indian Ocean as net security provider. With INS Jatayu, Indian Navy is underscoring its commitment for the peace and stability in the whole Indian Ocean region. With cameraman Ramashankar, this is Akash Sharma from Minicoy Island for CNN News 18. Brought to you by. चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए, मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं।
100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर एफपीओ मिला और एफपीओ के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता
और साहस चाहिए। और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की, और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की, और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। A very warm welcome. You're watching Plain Speak. I'm Akanksha Swaroop. Now, Prime Minister Narendra Modi today made a historical visit to Jammu and Kashmir, the first one after abrogation of Article 370. There was outpouring of love and support as thousands gathered to cheer for Prime Minister in the Bakshi Stadium in Srinagar. Prime Minister also struck a chord with the valley as he began with an emotional connect in his address. Aaj dil jeetna, aaj dil